So for the benefit of some of you who just joined a little late, uh, Niyati just shared a story, a wonderful story about Rinpoche, the Buddhist monk, about when he was only 6 years old and he first met his master, and the master tells him to wait. He'll be back, and he tells him to just wait in the room before he asks anything else. And this little 6-year-old kid sat and sat and sat, and it was 6 hours before the master came back. And even after that, he was still okay, even though he was thirsty, tired, hungry, whatever, bored, maybe, but he still just sat there. So, and he was accepted as a monk right then and there by the master because of this gesture, of this understanding of just being there. So yeah, so definitely patience, definitely surrenderfulness, definitely faith, uh, definitely this act of waiting, uh, allowing the master to do whatever that person needed to do, instead of getting in the way and looking for him and stopping him from whatever you're doing, whatever that person was doing, and saying, hey, what about me? So obviously for those 6 hours, he had something else to do, attend to, and he was just allowing it to be. But from a one more perspective is that the concept of time itself is a mental construct, isn't it? Time is something we make up. There is only the present, the now, just emerging, emanating, and presenting itself in whatever form it presents itself. There is only the now and the now and the now. There is only now. There is no this so-called flow of time is something that we create as a concept by compounding memory. The past and the future are constructs constructed by the mind, whereas in reality, in the universe, there is only now. It exists only as the past only exists as a memory. There is no real existence of the past. There is no actual real existence except for what is. So this is what I call the compounding effect. So I was talking to someone else on a one-on-one session this morning, and about how we compound situations, that somebody says something and in itself it's okay, nothing, not that difficult to deal with, not difficult to respond to. But if we have been compounding what has happened in the past, so for example, this she was sharing that her mother stays with her and is always often frequently correcting her in front of her husband and things like that. And she's a very high level executive in a large company, and yet in front of her husband, the mother, her own mother, would correct her. And she's, for example, let's say something even as simple as dinner is late. So if the mother complains dinner is late, in itself, what is the big deal? It's late, okay, it's already late, and I've done my best to make it on whatever time, but there are
other priorities and whatever was in the way, which and the fact is that the dinner is late right now, and all I can do about it is say that, be okay with it, that it is late, and acknowledge it and say, yes, you're right, mom, you're right, it's late. But what happens is, we say, oh, you corrected me this morning also about something else, that some other thing. Yesterday also you corrected me, and every time you correct me, and always you correct me. Not only you correct me in front of my family. Not only that, you don't understand that I am you know, a executive at this big company where I have 1,000 responsibilities, and I have so many things on my plate and so many things on my mind, and you don't understand, and all that. So we combine and compound. And that's when the trouble begins. And because we are combined and compounded, this simple statement of, hey, dinner is late. We are not having dinner on time today, or it's late. It's very late, which is easy to deal with. We cannot deal with it because we have the entire burden of history weighing down on our shoulders, and just instead of being light-hearted about it, and saying, oh, I'm sorry, I know, oh, did you have to wait hungry for so long? I'm so sorry. Instead of just saying that, we are not able to say that. And we get into this whole Ramayana, and a fight erupts, and you protest, and it goes into a spiral and causes more things to compound. So in this chakkar of interest, and that also compound interest, the principle is out of the window. The main jo mudda hai, wo side mein reh jata hai. So similar thing. Sorry, could you say that again? Sorry, I'm having trouble hearing you. So this is no, okay. So are you able to hear me? Yeah. Okay. Yeah, sure. नहीं तो बात ये हो जाती है कि हम जो असलियत, जो मामला है, जो मुद्दा है, जो मुद्दे की बात है, उसको हम भूल जाते हैं, और जो पहले किसी ने कुछ कहा था, पहले 5 बार कहा था, अभी तुम 10वीं बार कह रहे हो, तो ये 10वीं बार कह रहे हो, तो वो जो 10वीं बार जो कहा, वो अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं थी, आप उसको संभाल लेते। लेकिन क्योंकि 9 बार पहले कह चुके हो, इसीलिए 10वीं बार विस्फोट हो जाता है। तो ये एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। असल में तो सिर्फ अभी है, जो है अभी है। There is only the now, the now, the now, the now. And the now is never a problem. The now is always we can handle it, we can manage it, we can deal with it, we can be in love, we can be in okayness, we can be in truth, we can be in beauty. In the now, there's never a problem. We can always be loving in the now. It's only जब ये पूरा past और future जब हमारे ऊपर, हम अपने आप के ऊपर लाद देते हैं, तब जाकर ये लविंग होना, ट्रस्टिंग होना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, और फिर जाके ये सारी जो गड़बड़ होती है लाइफ की, वो निकल आती है। तो यही है। तो ये जो रिम्पोशे की बात थी, मास्टर रिम्पोशे कि अगर उन्होंने भी हर पल अपने आप में लिया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम अक्यूमुलेट करते हैं, अरे आधा घंटा हो गया,
अरे अभी देखो 1 घंटा हो गया, अभी 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए. So this cumulative effect, जो हमने इसको बार बार उसके ऊपर लादा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है. तो टाइम वही है. टाइम तो फिर चाहे 6 घंटे हो, 10 घंटे हो, 1 मिनट हो या आधी सेकंड हो, देयर इज ओनली नाउ एंड नाउ एंड नाउ एंड नाउ. तो एट अ वेरी डीप लेवल आई वुड से दैट शायद इतना सोच कर नहीं या समझ कर नहीं, वो छोटे से 6 साल के बच्चे को भी वो बस अपने में ही है, इसी वक्त में है, इसी पल में है. और चाहे फिर वो अभी आ जाए या 3 दिन के बाद आए, देयर इज ओनली द नाउ. So that is the most important lesson. That is the most important takeaway from this. We can go with to simply be in the now, be in the now, be in the now, only in the now. ये व्याज के ऊपर व्याज मत लगाते जाओ. इसी पल में रहेंगे तो कोई बस सब ठीक ही है, सब ठीक ही है. There is only the imminent present. The imminent जो अभी का पल है वही उभर रहा है और अनुभव में प्रस्तुत हो रहा है. बस यही चल रहा है. और इस अनुभव में, इस पल में सब ठीक है, सब ठीक ही है. और वो क्योंकि वो उस पल में ठीक था, वो छोटा सा बच्चा, इसीलिए वो 6 घंटे या 6 दिन भी बैठ जाता उधर. तो तो इसी को लेकर हम सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ये जो मेंटल कंस्ट्रक्ट है, मन की जो आदतें हैं, उनसे हम अपने आप की असलियत को जान सकते हैं, अपने आप की असलियत को देख सकते हैं. क्योंकि हमारी जो असलियत है उसमें ना तो यस्टरडे है ना कल है. Then life becomes much 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 easier. And even if it doesn't become easier, वो जो डिफिकल्ट है वो भी उसी पल में हो रहा है. और उस पल में जो भी मुश्किल है, वो उस पल में कभी मुश्किल होती ही नहीं है. हम क्योंकि उस पल की मुश्किल जो है, चैलेंज है, उसको हम पास्ट में खींच के ले जाते हैं और भविष्य में भी खींच के ले जाते हैं, तब ये बहुत बड़ी हो जाती है और हम नहीं सह पाते उसको. और उसके साथ हम नहीं रह पाते, उसके साथ हम डील नहीं कर पाते, क्योंकि हमने जो इस पल की बात थी उसको बहुत इन्फिनिटी इनटू द पास्ट एंड इन्फिनिटी इनटू द फ्यूचर. अभी ऐसा कहा, ये हमेशा ऐसा ही करते हैं, ये ऐसा ही करेंगे, बस ऐसा ही होगा. अब क्या मेरी जिंदगी बस ऐसे ही, बस हमने घसीट लिया भविष्य में इसको, और हम उसके साथ डील नहीं कर पाते. लेकिन हर पल असलियत में तो एक मिस्ट्री है. हर पल एक नया पल है. देयर इज नो सच थिंग कि ऐसा ही होगा. दिस होल कॉज एंड इफेक्ट थिंग इज ऑल्सो अ मेंटल कंस्ट्रक्ट. ये हुआ इसीलिए ये हुआ. ये जो हम लेकर बैठे हैं, ये भी एक मन का ये खेल है. मन का खेल है. असलियत में ऐसी कुछ नहीं है कि इसके वजह से ये हुआ. एक सिंपल एग्जांपल अगर लेंगे, लेट्स से जो विचार और विचारों की जो श्रृंखला है, उसको हम अगर 1 मिनट के लिए, if we suspend the thought aspect of it, then you will see that there is actually no cause and effect. Things are just happening.
Things are just happening one after the other. मान लो आप कोई आपको पूछता है कि चाय पिएंगे, और आप कहते हैं हाँ पीऊंगा, और 2 मिनट बाद कोई वो चाय का कप लेके आ जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमने मांगा, हमने कहा, हाँ इसी वजह से चाय आई. That's what we think normally. But if we, let's say let's say this was a movie which was going on, and you cut the dialogue out of it. This is dialogue kya hai? Speech. Speech is just thoughts. Thoughts being expressed and just words going back and forth. So if you just look at that movie, एक बंदा बैठा है, कोई आता है, चला जाता है, चाय आती है. That's it. There's no cause and effect. You're sitting, somebody comes, tea comes, but it is because we impose the thought, the speech on it. That's why we think कि मैंने कहा इसी वजह से चाय आई. So something to understand that reality doesn't have any of this cause effect. वो भी एक mental construct है. Reality अपने आप बस उभर रही है हर पल में. और वैसे भी cause and effect वाला जो idea है वो थोड़ा सा flawed है कि supposing you went through a red light and then there was an accident. So you'll say, oh, the accident happened. Let's say the other person missed the red light. Okay, the other person missed the red light. You were going normally. The other person missed their red light and banged their car into your car. So we think the cause is the other person missed. The cause is the other person missed the red light. Okay. But is that the real cause? The real cause, you can say, oh, it happened because he was distracted. That other driver was distracted and he was looking at his phone instead of paying attention to the road. So that is the cause. Not that he missed the red light. That is not the cause. The cause is that that person was distracted. तो कारण वो है. तो उसके भी आगे जाएंगे तो अच्छा वो टेक्स्ट मैसेज पढ़ रहे थे क्योंकि the person was already late और उनको मैसेजेस आ रहे थे कहाँ हो और कितनी देर में पहुंच रहे हो और वो उनको जवाब देने में लगे हुए थे. So that is the cause. It is because they were late. Acha. Is that the cause? No, it doesn't stop there. Why were they late? They were late because they didn't get up on time. So that is the cause. The cause of the accident is that they didn't get up on time. Now you are happy. No. Why is the person late? They slept late. Acha, why did they sleep late? Because they had a long argument before they went to bed. Why did they have the long argument? Oh, because they have this problem or that problem. You get the point कि इसका कोई अंत नहीं है. This is because of this, this is because of this, this is because of this. So this assignment itself is ये cause effect वाली जो ये श्रृंखला है, that assignment of cause effect is itself a misconception. So the challenge and the challenge of this whole understanding of non-duality is to understand this about reality. हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्या है, ये असलियत जो हम अनुभव कर रहे हैं, इसकी असलियत क्या है.
और उसको जानकर हम कैसे जी सकते हैं, उसको जानते हुए हम कैसे जी सकते हैं. Oh, go ahead, type your question. Oh, she wants, is muting, can they unmute? Yeah. Jennifer ji? Yeah, now. Okay, huh. Yeah, she is able to. Okay, go ahead. Okay, I think she has a, maybe you can type the question. Okay. Oh, no, but you're not speaking. Go ahead, speak. Yeah. So like the thing is, if we do not consider this cause and effect as this, then the whole idea of karma is also gone. Maybe so. Maybe so. Karma is also a concept. Karma is an idea. It may be a good idea. It may be a useful idea. Let me put it this way. It may be a useful idea in the sense that hearing that or thinking that karma is a reality or a truth or actually is that way allows you to be a little more careful with your words and your actions and your thoughts and how you live. Because but is it really true? Is it really true? There is no evidence of it being true. Because again, with karma also you end up with this first cause problem. If my actions in this life are a result of my actions in the previous life, then what about my actions in that previous life? Oh, that's because actions in the previous life, before that, then before that, then before that, then before that. Where does it start and where does it end? So this whole, ये पूरा ये मन का और दिमाग का ये खेल है. There is no, and see, here we want to base our life and our understanding directly on our own experience. On experience. Directly on experience. On what we, so, and what we experience is that I exist, the world exists, that I am. The qualities of I am, that which I truly am. ये मेरा शरीर जो है वो मैं नहीं हूँ. ये मेरा मन जो है वो मैं नहीं हूँ. मेरे विचार आते जाते हैं, मेरा शरीर आता जाता है, मेरे फीलिंग्स है वो आती जाती है, लेकिन मुझ में कुछ है जो नहीं आता जाता है. और वो क्या है, वो समझकर जीना is all there is. The rest of it is conjecture. It's modeling. It's a space of I don't know. I don't know. But the whole idea of cause and effect is a mental construct. And no matter, so अनुभव के तौर पर हम यही कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, और जो भी हो रहा है वो भी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस की एक्टिविटी है. बस इतना ही कह सकते हैं. उस कॉन्शियसनेस की एक्टिविटी में अगर हमें कुछ विचार भी आते हैं कि ये कर्म है, ये है, वो है, those are also simply nothing but activity of consciousness. जीएन को कुछ बोलना है. हाँ जीएन बोलिए. हाँ, ये मैं ये कह रहा था. हेलो. हाँ, शायद आपके दो आवाज आ रही है लेकिन डबल आ रही है, डबल. एक मिनट, दूसरा एक म्यूट कर दे. दोनों
दोनों में से एक म्यूट करें। हाँ, एक मैंने म्यूट कर दिया है। हाँ ठीक है। ओके, तो ये जो इन्होंने जो पूछा ना, जैसे नियति जी ने, और आपने हाँ वो जो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, मैं दोनों चीजों को कोरिलेट कर पा रहा हूँ। मेरी समझ से क्या हो रहा है कि जब हम काज एंड इफेक्ट को छोड़ देते हैं हृदय से, मन से, जो आपने मन का जो कंस्ट्रक्ट बताया, तो वो कर्मा जो है वो अकर्म बन जाता है, फिर वो कर्म रहता ही नहीं है। इट इज कर्मा टिल वी कनेक्ट दोज थिंग्स विथ काज एंड इफेक्ट। मैंने कोई कर्मा किया, उसका इफेक्ट ये होगा, मैं ये कर्मा करूंगा तो उसका इफेक्ट ये होगा। सो टिल देन वी आर इन कर्मा, वी गेट द consequences attached to that. Once we start thinking without cause and effect, तो वहां पर जैसे आपने कहा ना कि मन के कंस्ट्रक्ट से आप बाहर आ गए, तो वो हर कर्मा जो है अकर्म हो जाता है, फिर वो कर्म रहा ही नहीं, वो वैराग की स्थिति हो गई। और वैराग में किया गया कर्म कर्म होता ही नहीं, अकर्म हो जाता है। इट इज ओनली हैपनिंग, इट इज हैपनिंग, It is only happening. नथिंग, नो कॉन्सिक्वेंसेस। Exactly. Could I add something, Sanjiv ji? Sure. Please. So I completely resonate with what Pandeyji said. The thing is that in every moment, if we consciously, think and are well informed on, and we base our thinking on that consciousness, then we do not act out of programming. It is when we act out of our programming, the karma impacts. Simple as that. Correct. But when the question is, what is the absolute truth? Yes, at one level, when we have cause and effect, then in that, वो मॉडल आपने अगर बना दिया है तो उस मॉडल के अंदर हाँ कर्मा हो सकता है। लेकिन अगर वो मॉडल से हम आगे बढ़कर गए हैं, जो सच्चाई है, जो तत्सत है, जो unchanging truth about reality, which is consciousness, and that all is consciousness, and there is only consciousness. In that realm, in that model, in that dimension, फिर ये then this does not hold anymore, and we want to operate out of this absolute reality, right? That's so. Yeah, so as long as we are caught up in this cause effect thing, yes, karma, ye sab hoga, but when you are stepping out of it, then you're no longer subject to those. It's like when you go from one country to the other, there may be laws in the one country, and as long as you're in that country, yes, those laws are the reality. But once you've left that country and gone to another one, those laws don't apply anymore. So we are going about rising to that dimension, rising to that reality in which we have freed ourselves from this whole concept. ये concept ही हम छोड़ देते हैं, और concept छोड़ने के लिए और एक बात, just 1 second, is that this I itself is a construct. मैं जो हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, the I itself is a mind construct. तो कर्म किसको? कोई है ही नहीं। किसको लग रहा है ये कर्म? कोई है ही नहीं, बस वही है। That all there is consciousness. Who is giving punishment to whom? There is no such thing at that absolute level. But Yeah, and cause. If there is a newborn child who is autistic or deaf and dumb, there is no karma from his side. He has come with some karma, and that is why, don't you think there is an effect? No, see, this is the mind. The mind grabs onto these things. It latches onto. It feels lost without having something to hold on to, and the thing that it holds on to is cause and effect. देखो ये है, और ये है इसीलिए वो मन है, और इसीलिए वो मन है तभी मैं हूं, क्योंकि वो अगर छोड़ देगा ये सब तो उसके अस्तित्व का ही कोई जरूरत ही नहीं है।
its very existence becomes a questionable. In fact, it is a questionable existence anyway, because there is no separate you or I. So this separate you and I, for its very existence, has to come up with all this stuff to convince itself and you as in this body mind. Look, this is how it is, this is how, and I therefore become important. I takes on a place of relevance. वरना उसका relevance ही नहीं है. Can I हम, share something after Sanjiv you ji, finish? 1 minute, 1 minute. yeah, Sanjiv ji, very good. आप वो जू आप लोग गए थे 2 years back, do you remember? And you had fallen from the horse that Christmas holiday. Yeah, I have a Manoj memory of. I have a memory falling of. from, yeah. So and then Manoj, you asked Manoj ji, and why this happened to me? So he said karma. Wait. That's one. I never asked him this. He No, may you have asked said something. about karma. No, I didn't ask Okay. anything about why it happened, Baba. Then what was it? No, he just said when he saw that I fell, yeah, who knows? Maybe some karmic thing And from the then past or then something. you said, why did I got saved then? Because the horse did not run, and that thing was, the leg was in the leash. The leg was tied in that saddle, and the horse Saddle, did run. yeah. So, yeah, and you asked him, why did then this did not happen to me? So he said, because you had gone to the mandir. I know. Yeah, Which so is based on that, teach based on that what? us this whole thing. Yeah. That's all construct. Is मैं the mind always tries to latch on to this kind of thing, because the mind का जो अस्तित्व है उसी पर निर्भर है कि ये सारी ऐसी बातें हो, वरना उसकी कोई जगह ही नहीं है, उसके लिए जगह नहीं रहती. माइंड लॉजिक तो ढूंढते रहता है. माइंड लॉजिक ढूंढता है. Mind looks for logic, mind looks for cause and effect. In this case of what Anamika asked also about when is the autistic child, we don't ask 1,000 times when millions of children are born without autism, why they are born without autism. We don't ask. तभी नहीं पूछते, तभी पूछते हैं जब कोई गड़बड़ हो गई. तो माइंड एक अपॉर्चुनिटी ले लेता है अपने आप को एस्टैब्लिश करने को कि देखिए ऐसे होने से ऐसे हुआ, एंड वरना it's just happening, it's all just happening in this moment. To take it one level further, this autistic child right now is only just a thought, it's just a memory, right? It doesn't exist as such. There is no independent existence. Abhi to in this present moment, here and now, there is only a bunch of people talking about karma. That is the only reality. Okay, हाँ कभी माइक के आकाशिक रिकॉर्ड का क्या होगा ऐसे में? माइक चिंतित है कि ये आपने उसका धरातल जो है फाउंडेशन हिला के रख दिया आपने. तो क्या है ना, संजीव जी तो मेरी दुकान बंद करने गई है. लेकिन मैं आपको बताऊं, इसलिए तो है. नहीं मैं बताऊं, मेरी एक दुकान मिनट बंद सुनिएगा. करे. ऐसा है जेनिफर माँ, ये इस तरह का है कि जैसे अरिथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, पॉलिनोमियल सोल्यूशन करने को दे दिया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें सपोज x इज इक्वल टू दिस मच और सपोज दिस इज दिस मच. तो फॉर दैट वो वहां आकाश रिकॉर्ड काम आएगा. जो संजीव जी बता रहे हैं वो दैट इज एट एब्सोल्यूट लेवल. लेट द पर्सन कम अप टू दैट लेवल, टिल देन यू आर देयर. Then over to Sanjiv ji. It is the path. Exactly. Hello. Exactly. One second, Chitra. Yeah. So at the before that, Kavita ji wanted to say something, but see, we have, we create the market first of all.
ये कर्मा वाली बातें हैं, मेडिटेशन की बातें हैं. It's fine, but the market is created market. Selling water by the river. नदी के किनारे बैठकर पानी बेच रहे हैं. वैसी वो बात तो है. ऐसा है, पूरी पूरी संजीव जी, पूरी अरिथमेटिक्स को आपने ध्वस्त कर दिया. कहा शून्य नाम की चीज होती ही नहीं है. अब आदमी बेचारा गिनती करेगा कैसे शून्य के करेगा बगैर? वो कैसे? तो खो गया. एग्जैक्टली तो असल में ये है. तो असल में जब ये हम समझ जाते हैं, फिर चाहे मार्केट में चले जाओ, आपकी मर्जी भैया. ये जाते हैं, नो प्रॉब्लम, बट it has nothing to do with the absolute truth, the absolute reality, which is all there is the now, all there is consciousness and the activity of consciousness. अगर अगर आपको ये समझ होनी है, अगर आपको ये समझ ज्ञान में बदलनी है, तो वो जब होगा तब होगा. मीन टाइम आपको टाइम पास के लिए मेडिटेशन करना है, कर लो. उसका कॉज एंड इफेक्ट नहीं है. इट्स नॉट अ कॉज एंड इफेक्ट थिंग. शून्य से लेकर अनंत तक सब कुछ अनंत में है. सब अनेकों अनंत अनंत भरे हुए हैं. सब एग्जैक्टली कुछ अनंत है. वो एग्जैक्टली. और इन्फिनिटी ये है जो वही वही तो हो रहा है. बस वही चल रहा है, वही चल रहा है, और हर पल में वही चल रहा है. तो जब हम ये बातें भूल जाते हैं, तब जाकर ये सब हमें करना पड़ता है, जो भी है. हाँ कविता जी, व्हाट वर यू सेइंग? Sanjeev ji, what I feel what you are saying is when the person reaches beyond body and mind, like Ramanna and Ramakrishna Paramhans, you are talking of that state. But even before they reach, I feel आप अमेरिका जाके you are debunking the whole Vedic philosophy, and we are made to sit at a table without its legs. I cannot digest it. I cannot digest my because वो नहीं, नहीं. accident हुआ could not be your actions, could be even जो बंदा drive कर रहा है opposite car, उसका karmic. There are layers to actions, and that is why I feel that supreme power, the divine light, is free of everybody because the destiny is sitting on our own shoulders of our own cause and effect. हमें आप बोलोगे एप्पल का बीज लगाओ और ऑरेंज हो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो रहा है ना. There has to be a cause and effect. अभी आप अमेरिका जाके कार्मिक थ्योरी के वो बन गए हो. Oh gosh. नहीं, अमेरिका जाके नहीं. ये if you go back to maybe a video from 2 years ago, यही बात की थी, और इंडिया में बैठे बैठे. बट ये पहली बार हम बात नहीं कर रहे. बट जमीन, क्या कहते हैं पांडे जी, वो पैरों तले जमीन खींच लेना, ऐसे कुछ है ना. हाँ, पैरों वही तले से जमीन खिसक गई. जमीन खिसक गई. तो वैसी बातें तो करने हम मिलते हैं, जो जिस कंफर्ट जोन में जो सोच के हम बैठे हैं कि ये सत्य है, उसी को क्वेश्चन मार्क करना, उसी वही जमीन को हिला देना, मैंने कहा वही ना, तो. आपने अब देखिए कविता जी इज नॉट देयर ऑन. चलो ठीक है. आई डोंट नो इफ शी इज, उतनी जमीन खिसक गई कि उनका इंटरनेट भी खिसक गया साथ साथ. But there is no cause and effect. It is not because of this discussion. Correct. It is not because of that. It is simply what has happened. It is simply what has happened. It is what is happening. It is what is happening. Right now, she is not here. But Sanjeev ji, according to Vedic philosophy, what Panditji said was right. It is when you are completely in oneness with the consciousness, higher consciousness, the cause and Correct. effect does not impact on you.
That's what they Correct. say. That It is is I- when you are No, not no, I connected. agree. Correct. there's a So I'm cause and agreeing with you, Han. So thank you. You reminded me what I wanted to say to Kavita ji also. That आप कहते हैं कि okay, when you're in the Raman Maharshi state or that only, then it doesn't affect. So that is the Actually, there only is no cause and effect, but we make it up we make it up. and we We live make by it up. it so much with our belief systems. Yeah, And because the that belief we system is so strong, it goes on and on. What you believe. exactly correct. Now, how long कहीं you भी want to? हमारा आपका जो चल रहा है, जो अपन मीमांसा कर रहे हैं ना, कहीं वेदांत से और रमना महर्षि से या उनसे कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. इट इज ओनली एक्सटेंशन ऑफ द सेम थिंग. वी आर एक्सपेंडिंग And द सेम थ्योरी. कोई we अंतर are नहीं है. expand. कोई अंतर नहीं है. वही अभी exploring, expanding वही और मैं चल रहा है. लेता हूं. अगर जो लोग मैथमेटिक्स जानते हैं, अगर आप देखिएगा, अगर कहा जाए कि 0 से 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं, तो बताया जाता है इनफाइनाइट. ओके, अब आप कहें कि उनके बीच में मान लो 1 and हाफ और 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर है. इट इज इनफाइनाइट. सो इनफाइनाइट इज एग्जिस्टिंग एवरीवेयर. कोई अंदर नहीं है. मैं शून्य मान लूं तो भी वही है, अनंत मानूं तो भी वही है. कोई फर्क नहीं पड़ता है. वी आर नॉट एबल टू डायरेक्टली सी कोरिलेशन. वो है वही चीज जो वेदांत में. कोई फर्क नहीं. गीता का कर्म क्या वही है. मैंने बहुत पढ़ा है. इट इज ऑल द सेम थिंग. मैं अभी भी ऐसा नहीं कि मेरा गीता के प्रति अविश्वास हो जा रहा है. It is the same thing expressed in some other words in a broader context, broader sense. Absolutely. And what I was going to say also is that this is the absolute reality. मतलब ये रमन महर्षि की सच्चाई नहीं है. सच्चाई अगर एब्सोल्यूट है तो बस वही है. It is not limited to only Raman Maharshi or this or that or that. It is not. What prevents you from stepping out of this? Nothing. There was an interesting movie I was sharing also. I saw the other day. It's a Woody Allen movie called The Purple Rose of Cairo. So in this movie, there is a woman who is kind of during the depression. She's working very hard, but the only escape she finds is in the movie hall, in the movie cinema. तो वो मूवी देखने बार बार जाती है और कभी कभी वो थिएटर में जाके बस बैठ जाती है. तो वही यूएसए में तो हर शो के बाद बाहर नहीं निकालते लोगों को. जो आता है वो आता है, जो जाता है वो जाता है. इंडिया की जैसा नहीं है. तो वो बैठे बैठे दिन भर एक ही मूवी बार बार देखती है, जिसमें बहुत कुछ अच्छा बहुत उसकी जो सपने की दुनिया है वो वहां चल रही है. तो वो देखते रहती है. तो इतनी बार देखी कि ये हो गया कि एक सीन में जो मूवी का जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है उसका जो हीरो है वो अचानक अपनी डायलॉग से हटकर उस औरत के सामने देखता है जो ऑडियंस में बैठी हुई है और कहता है कि मैं देख रहा हूं तुम यही मूवी बार बार देख रही हो, कितनी बार देखोगे हमें. और वैसे भी मुझे आपको देखकर ऐसा लगता है कि कोई जाना माना पहचाना और मेरा अपना कोई है. और वो स्क्रीन से बाहर आ जाता है वो कैरेक्टर. He comes out of the movie and steps into this world. And after stepping into this world, the whole movie happens. So once he steps out of the world, that world of shadows and the movie that was going on the screen and this reality which he is now encountering, उसमें जो अंतर है उसके बारे में, it's a very very wonderful, mind bending. It's sort of the starting point of movies like Inception and Matrix and all of those. But बात यही है कि जो rules उस मूवी के अंदर जो लागू पड़ते थे वो बाहर आके वो अलग है दुनिया. And this whole thing is also just a movie. So my question to you is, what stops you also from dropping this I and stepping out and reclaiming your true position? There is no difference between you and Raman Maharshi.
तो उसके बट क्योंकि अगर सच्चाई जो है, अगर सच्चाई है तो वो सच्चाई सबके लिए है। ये रमन महर्षि के लिए ही नहीं है सच्चाई, सच्चाई सबके लिए है। इट्स अ डेमोक्रेसी। आप भी उसी सच्चाई में आ सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा है, सिवाय अपने आप को हम रोकते हैं। ये सारी बातें पकड़ की, कॉज है, इफेक्ट है, कर्मा है, टाइम है, पास्ट है, फ्यूचर है, और सबसे आगे जाके ये कहानी शुरू होती है कि मैं हूं। ये मैं से शुरू होती है। जो इनर, जो आउटर सेल्फ है, उसको हमने मैं और सच्चाई में जाके बदल दिया है कि ये है। और वो है ना, वो एक कौन सी कहानी है अबाउट दिस, वो क्या वो कुछ इट्स सॉर्ट ऑफ अ क्रूड वन, बट वो साधु की लंगोट या ऐसा कोई कहानी है जिसमें वो सब कुछ छोड़ देना चाहता है, लेकिन लंगोट तो चाहिए बाबा। तो वहां से शुरू होती है, लंगोट चाहिए तो फिर धोना पड़ेगा तो साबुन चाहिए तो पानी चाहिए तो बाथरूम चाहिए तो घर चाहिए तो फिर गृहस्थी चाहिए, बीवी चाहिए, खाना चाहिए, सब कुछ लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो ये सारा जो मामला है, जो सारा माजरा है, ये सारा ये कर्म है, कॉज इफेक्ट, टाइम, पास्ट, फ्यूचर, it collapses and is built on top of this one idea called the I, कि मैं एक अलग और सेपरेट एक कोई अस्तित्व है मेरा, मैं हूं। मैं यानी जो संकुचित कॉन्ट्रैक्टेड नेम कॉल्ड संजीव। वहां से जाकर अगर ये मान लिया तो फिर ये भी मानना पड़ेगा, फिर ये भी मानना पड़ेगा, फिर ये भी मानना पड़ेगा। और अगर हमें ये सारा जो ये कंस्ट्रक्ट है उसको अगर उसको गिराना है तो जो कॉर्नर स्टोन है वो हटाना है। बिल्डिंग का कॉर्नर स्टोन होता है, वो कॉर्नर स्टोन निकाल देता है तो सारी इमारत गिर जाती है। और ये सारा जो कंस्ट्रक्ट है उसका कॉर्नर स्टोन है मैं, द आइडिया ऑफ आई विच वी क्लिंग टू लाइक एनीथिंग। मैं हूं। और उसको हम जैसे ही छोड़ देते हैं, टाइम स्टॉप्स, कॉज एंड इफेक्ट स्टॉप्स, कर्मा स्टॉप्स, you enter the realm of okayness, you enter the realm of love, you enter the realm of being, you enter the realm of okayness, you enter the realm of compassion. So up to us, as long as we want to believe, we can keep on believing. See, I'm not, in fact, Gita में भी तो यही कहा है, to step out of karma, even though it is not about remaining in karma. And the way to step out of it is what we are talking about. But rather we are arguing that it is there, and we want to cling to karma. उससे अच्छा रास्ता है कि that is the Maya, the illusion God has created, or the power has created, the illusion and delusion. So we have to step Correct. out of it, but for that we have to go beyond our desires and love unconditionally. Correct. ऐसे चुटकी बजा के होने के लिए इतना I don't know easy है. Sir, karma seems to be the बहुत बढ़िया, क्या बात है, कविता जी, no, what you are saying, you are unconditional love, you are the truth, you are that. That is when we go beyond our mind and body. Our mind. It's the mind which has made the veil. Now we are born with that veil of Maya. Correct. No, we are not born with that veil. We have taken on this veil. अभी उसको वेल को छोड़ना किसके ऊपर है और वेल को हटाना किसके हाथों में है? तो छोड़े ना, कभी छोड़ेंगे? तो ये किसका विषय इंतजार है? अगले सत्र में जारी रहने की जरूरत है। इस विषय को अगले सत्र में मीमांसा की जरूरत है। Okay, we'll do that. Okay, great, we'll continue. But meantime, इतना याद रखें कि अगर ये माया है भी, वो मैंने बनाई हुई है, आपने बनाई हुई है,
और इस माया से बाहर निकलना, इस माया से बाहर निकलने की से भी आगे है कि इस माया के थ्रू देख लेना सच्चाई. What is the truth behind this maya, this divine force which is creating all of this? उसको देखना, उसके साथ रहना. Seeing Sanjeev through the ji, maya, it's it like is in you're your telling hand. us to get off the rotation of the earth and the gravity and pop out, we are out, pop out, and then we are all one. But we are still Correct. rotating in this Chakravyu. Correct. That the chakra view, this earth is also part of this illusion. We are talking about seeing through the illusion. चलो यही topic रखेंगे next time. How to see through this illusion. Yeah. How to see through it. Because we are Wonderful. all drunk with the illusion. Yeah, we have to get. Yes. Wonderful. Chitra, she left, I think. Okay, she wanted to say No, something, sir, but I yeah. am here. Actually, I was saying that I feel that karma is the escape route. कुछ जवाब नहीं मिलता है तो ये कर्मा है. कोई आंसर नहीं है Yes. तो कर्मा है. And no Correct, logic correct. behind it. So I think that Correct, correct. उतना ही बोलना. Abs- Thank you. Yes, yes, very true, very true. We cling to this. हम ये क्या बोलते हैं, कुछ भी जो हाथ में आया पकड़ लेते हैं क्योंकि लग रहा है कि हम डूब रहे हैं. Exactly. Yes. हाँ, या पुरुषोत्तम संजय जी. जी, मुझे आपकी एक बताई हुई स्टोरी याद आ रही है. हाँ. और मैंने कहीं पढ़ा भी है कि एक आदमी जा रहा था, साधु जा रहा था रास्ते से, और उसने देखा कि एक आदमी चिल्ला रहा है, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ. उसने एक पेड़ को पकड़ के रखा था. हाँ. खुद ही पकड़ के रखा था और वो चिल्ला था, मुझे छुड़ाओ, छुड़ाओ, छुड़ाओ. तो साधु Right. उनके पास गए और बोले कि क्या बात क्या है. तो बोले मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, इस पेड़ से छुड़ाओ. बोले तो आप बोले आप अपने हाथ बाजू में कर दो, बाहर हो जाओ, आप छुटे हुए हो. आप, मैंने ही पकड़ के रखा है और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे छुड़ाओ, छुड़ाओ, छुड़ाओ. ये सारी चीजें Right. माया भी उसी का ही प्रकार है. मैंने ही पकड़ी है, उसको Correct. छोड़ना बोले तो क्या, मैं छोड़ दूं तो अभी छूट जाएगी, नहीं तो जिंदगी भर भी नहीं छूटेगी. करेक्ट, करेक्ट. और सही बात है, बिल्कुल. लेकिन और इसे छोड़ने की भी जरूरत नहीं, इसके थ्रू देख लेना है. ये जो माया की जो जाल है, उस सीइंग थ्रू की वो जाल है ही नहीं. And look at this beautiful puppy. Oh, he's so sweet. Bijou, what is his name? Tiju. Bijou. Okay, very cute. So Maru sweet. Tiju. Tiju. Tamaru Tiju. Yeah. Wonderful. You are on mute, Kavita ji. That Well, puppy is okay. looking like a lamb to me, bakri. And वो बकरी जैसा ही है ये. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. Great. Thank you. Hari Om Tat Sat. हरिओम.